Hi guys, this is Noni Mehta and I welcome you all here in this new video of law prep tutorial, and here we are discussing the English section strategy, okay, for the CLAT aspirants who are giving CLAT, appearing CLAT 2025, right? So let's discuss the strategy for the April month. April, summers have started. It is sultry for somebody, sweating hard, and for some, the weather is fairly okay in some parts. But anyways, gear up students, now exams are over. बिल्कुल है ना, buckle up now. बिल्कुल 6-7 months बचे हैं और we have to work hard. Whether you are beginner, whether you're a dropper, whether you're a school going student, anybody, है ना. So let's start without wasting much time. What is the strategy? Be in the full form now. Okay. Right. We have got three types of candidates here. Who are those? Number one, beginners who have recently joined. Okay. Number two, droppers. Droppers, you know that. And number three, school going. Right. You are in 11th standard or you are in 12th standard. You've just you have started it probably 3 months ago or 6 months or 8 months ago. Right. So let's start with the droppers first. So what strategy they should work on so that कुछ अच्छा वाला बढ़िया वाला कॉलेज जो उनका ड्रीम कॉलेज है उनको मिल जाए. चलिए ड्रॉपर्स, देखिए आपकी स्ट्रेटजी. Number one, newspaper. Okay, you have to read newspaper. That's a must. तो which newspaper? Hindu, Indian Express. कितना पढ़ना है? Of course, editorial section. Read the whole editorial section. You know the editorial section, है ना, जो आपका in between वाला page होता है. तो current news, you know it because you have to work on current affairs also. तो बिल्कुल newspaper, तो if you can read it full, whole, that would be great. But at least editorial section, every day you have to dedicate the time. So something like 1.5 hours, okay, for this kind of reading, newspaper, current affairs. And next, I don't have to talk much about the newspaper reading. Next will come to books. So of course, read books, novels, short story books, which you are doing it from past so many months. And here I've given some suggestion also, but I keep on repeating those suggestions also. Books of Sidney Shelton, Agatha Christie, Ruskin Bond, Anita Desai, Dan Brown. You all know the names now. So just keep on reading, and some interesting versions, and some kind of those books in which the deeper meanings are there, ताकि आपको इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं उनको करने में है ना प्रॉब्लम नहीं आए. तो डीपर मीनिंग वाले जो होते हैं जिनका आपको अच्छा खासा, सुपरफिशियल वाले जो होते हैं, इजी वाले जो होते हैं, आप ऑलरेडी वो शॉर्ट स्टोरी बुक्स पढ़ चुके हैं. तो प्लीज़ गो थ्रू सम गुड बुक्स नाउ. ठीक है, I have given some suggestions earlier also, and in this video also I would be suggesting you some about some videos, some podcasts, suggestions would also be there. But yes, so fiction, non-fiction, you must have read Rich Dad excuse me, Rich Dad Poor Dad. Okay, you must have read Ikigai, Atomic Habits, many more books you have read it. So same kind of suggestions, I'm repeating it. Magazines, Time, The Week, Science, please, ऐसी अच्छी जो international magazines है, please keep on reading those. And of course our Indian best like the India Today, Outlook, Frontline. You can read any magazines, but at least I recommend you to read 2 magazines and 2 newspapers. Newspapers, Indian Express or the Hindu, or magazine, I've already given the names. Going through blogs, websites like Philosophy Now, Science, Atlantic, and going through the essays and articles of Eon, that's a must. You have to. That is very important because diversified reading you have to do it. So कुछ philosophy से पढ़ो, कुछ history से पढ़ो, है ना, History Today जो हमारा website है उससे पढ़ो. तो आप diversified reading होनी चाहिए. Always remember, more from philosophy and literature. Please remember this thing. Then watching films, I have given some suggestions like Notting Hill or The Hangover. Why these movies? These are a bit old movies. That means 90s movies. But why I have given this suggestion to you?
because here the kind of English which they have used, the one-liners, the idioms and phrases which they have used, they are really good. So you must watch these movies. Okay, so that is my suggestion. Otherwise, whatever the movie which you want to watch, of course the English movie. Okay, web series, whichever you want to watch, whichever you like. Even some people have this problem, अब आपके केस में तो नहीं होनी चाहिए ड्रॉपर्स में, बिकॉज यू ऑलरेडी वर्किंग हार्ड फ्रॉम पास्ट 1 year, बट स्टिल पीपल हैव गॉट दिस प्रॉब्लम, अरे यार मज़ा नहीं आ रहा वो इंग्लिश की वेब सीरीज देख के, वी वांट वॉच हिंदी वेब सीरीज. सो इफ़ यू वांट वॉच हिंदी वेब सीरीज, देन प्लीज़ स्टार्ट इंग्लिश सबटाइटल्स को स्टार्ट कर दीजिए और उनको देखिए, उनको पढ़िए. All right, so but my recommendation, English web series, but still if you don't want it, then with English subtitles watch Hindi web series. At least 2 movies देखिए, 2 web series देखिए, है ना. तो entertainment, English is entertainment plus study, it's all about that. But CLAT means English, of course. Then listening podcasts, TED Talks. Next है ना, जैसे जैसे मूव ऑन होंगे, I'll be giving you more suggestion about the podcast and TED Talks which you can watch it. Soon we'll see it. But otherwise, whichever you are watching it, whichever you are listening those podcasts, please do listen to them. देखो ज़रा सजेशन, द गैरी वी ऑडियो एक्सपीरियंस, टिम फ्रिडमैन, ये इनका पॉडकास्ट बहुत बढ़िया है, एंड टिम फेरिस शो, दीज आर द पॉपुलर वन. ओके, एक बार जस्ट एटलीस्ट वंस प्लीज गो थ्रू दीज, है ना. एक बार ज़रूर उनका पॉडकास्ट सुनिएगा. तो सजेशंस आई हैव ऑलरेडी गिवन इट. नेक्स्ट ड्रॉपर्स, रिमेंबर आपके लिए स्ट्रेटजी, आपके सजेशंस, रिकमेंडेशंस आपके लिए ना, देयर वुड बी प्लेंटी. Solve at least 25 mock tests. Full mock test you want to do it, okay, or you want to give specifically English subject wise, English mock test, then also it's okay, but at least give 25 mock tests, okay, in which English is the complete test of English you should give, right? But it's not all about mindlessly giving mock tests and mock tests. You have to do the analysis. Even analysis of every mock test, it's a must, remember. Okay, the mock test with analysis at least 25 in this month. Okay, याद रखिए, स्कूल गोइंग कैंडिडेट्स आल्सो देयर. तो आपको अपना एज बनाना है. तो हाउ कैन यू मेक दैट एज? by giving more and more mock tests. Mock test is the key for the selection. Next, vocabulary enhancement, which you are continuously doing it. You would be having some high frequency GRE word list that you are using it, that you're going through it. Revision is a must. Okay, so revision every week, whichever new words which you are doing, you have to revise it. During the weekend, you have to revise it. So you are using those flashcard techniques. Flashcards, you know it. आप word लिखते हैं, ठीक है, and at the back of it, you are writing the usage or the synonyms, है ना. So just going through those flashcards if you have made those, or some good vocab apps. Like best, I would say the Hindu vocab app. Hindu is very not. It's not only Hindu vocab app. That's the full name. It's a very good app. Otherwise, whichever app you find it interesting, you can use it. My recommendation, the Hindu vocab app. Okay. And root words techniques, some association methods like mnemonics, all these techniques which you have learned in the class, please use it. Please, at least 5 new words every day you have to do it. Maybe by root words, maybe by anything apart from the class. Class words which your teacher is teaching you, which your faculty is teaching you, that's different. You yourself have to dedicate time for finding 5 new words and their meanings, their synonyms. And every time, every day you have to revision, but especially on weekend, you have to revise the whole week's vocabulary. Revision is a must. Mock test, giving solving those mock tests, it's a must, and the analysis also must. These 3 things, please remember. Then solve at least 1 vocabulary sheet. That means if you are getting this through your faculty, then it's great. Otherwise, find it at least 1 vocabulary sheet and solve it of 20 questions.
Okay, any vocabulary, maybe some CAT exam sheet, you will find it. So solve it. That's okay, but please do it. Self-study time. Now, because you're not going to school, you have got enough time for self-study. So minus those 2 hours or 3 hours of this lecture period, in which 2 or 3 hours which you are taking, which you are sitting in the class, that's different. Apart from that, at least 2 to 3 hours you have to dedicate in to English. What you would be doing? Newspaper reading, magazine reading, and those watching and listening to podcasts, those are different. Apart from that, you have to dedicate 2 to 3 hours. You are giving mock tests, you are learning vocabulary in that, whatever you're doing, but don't include reading newspaper and those watching and listening channels. Okay, don't include that thing. So self study time 2 to 3 hours you should, and in which 1 hour for solving the RC for and the next 1 hour you can take it for vocabulary. Anything, any combination would go, right? Okay, next school going students, right? Our school going aspirants. Now you are in 12th. In 11th standard, you have some months you have come to law prep tutorial and you have gone through some good content, and your teacher has taught enough to you. Sub revision karna hai, sub revise karna hai. Remember it. What more you have to do it? Of course, reading newspaper, number one thing. You have to do it anyhow, है ना? Even you are feeling sick, तो न्यूज़पेपर रीडिंग में भी कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है. Even you are tired, do whatever, whenever you get the time. Maybe you take the newspaper in your school, and whenever you find time in school with substitution period है, anything, you can read there. But you have to read newspaper. Or you want to read it from app, okay, fine. हर उसका ऐप आता है हर न्यूज़पेपर का. But of course, which newspaper you have to read? I've already recommended. Which one? The Hindu or the Indian Express. Okay. लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि इंग्लिश इतना अच्छा नहीं है, it's only decent, है ना, and you find the Hindu a bit difficult, then you can go for Times of India, है ना. और यू हैव बेसिक इंग्लिश है आपका, तो टाइम्स ऑफ इंडिया आप पढ़िए प्लीज़. लेकिन याद रखिए, आफ्टर 2 months you have to switch to the Hindu or the Indian Express. Okay, right. Again, those reading newspapers, you have to read books, novels, same novels which I've suggested to the droppers also, I'm suggesting to you also. Okay, same kind of novels, Agatha Christie, Sherlock Holmes, Shakespeare, you have to read it. Okay, and same kind of magazines, Time, it is written here, The Week, Science, Time, these are international magazines which are really good. You should read it. Otherwise, our Indian magazines, the India Today, Outlook, आप चाहें तो है ना, टेलीग्राम पे ऐप आता है, उसमें different magazines they send it. ठीक है, मैगजीन्स वाला जो ऐप है, यू कैन डाउनलोड, आई मीन दे वुड बी सेंडिंग इट. तो टेलीग्राम अगर आप यूज़ करते हैं तो यू कैन फाइंड इट देयर ऑल्सो. तो आपका सॉफ्ट कॉपी आप रीड कर सकते हैं. कुछ नॉवेल्स आपके लिए सजेशन है यहाँ पे. द नेमसेक, Jhumpa Lahiri's novel. Jhumpa Lahiri, she won the Pulitzer Prize, the literature prize, है ना, America's literature prize. So उनका नॉवल है द नेमसेक. देन मालगुडी डेज, वेरी फेमस. इस पे टीवी सीरीज भी आया है ड्यूरिंग दूरदर्शन डेज, बट द बुक इज़ रियली गुड एंड आई थिंक यू शुड रीड इट. R.K. नारायण की ये बुक है. तो मालगुडी डेज, द नेमसेक, these are the suggestions. Both are Indian authors or Indian origin authors. Please do read those novels if you can. And classic kind of novels, I would say. Of course, going through websites like the Philosophy Now, History Today, Atlantic, Science, Scientific American, or Eon articles and essays. It's a must. Remember, Eon articles. Okay. Got it? Clear? AEON. That's a website name. AEON. Okay.
Then listening to podcasts or TED Talks, your teacher, your faculty would also be suggesting you about some TED Talks also. She would be sending in the WhatsApp group also. But some suggestions I've already given to the droppers. You can go through that. Same suggestions, I would say. See here, it's written. The Gary Vee audio experience, the Tim Ferriss show, Lex Fridman, international shows हैं, international podcasts हैं. Please go through them. If you find them interesting, keep on, listening to them. Otherwise, find something new. And do tell me also. You can ask from your faculties also which podcast you should listen. बहुत हेल्प करेंगे आपकी इंग्लिश इम्प्रूव करने में. एंड इफ यू इम्प्रूविंग इंग्लिश, दैट मीन्स यू आर इम्प्रूविंग नॉट ओनली द इंग्लिश सेक्शन, योर लॉजिकल रीजनिंग, योर लीगल रीजनिंग, all the three parts, all the three sections you're improving. So whatever the work you are doing, and current affairs तो फिर वो reading newspaper से भी cover हो जाएगा. तो 4 sections except QT, you are covering all the sections just by doing these activities. Okay. हाँ, films, web series आपको भी watch करनी है, at least one film, one good English film. Film means English film, and one good web series. इंग्लिश फिल्म का सजेशन ऑलरेडी मैंने ड्रॉपर्स के उसमें सेक्शन में दिया है. यू कैन सी हियर द वेब सीरीज ऑल्सो. ब्रेकिंग बैड है ना, इट्स अ गुड वेब सीरीज, इट्स वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स. क्या है इसके अंदर, एक केमिस्ट्री टीचर होता है ना, ही वॉन्ट्स टू मेक मोर मनी, सो वॉट ही डज एंड वॉट ट्रांसफॉर्म्स इनटू वॉट. एक टीचर से वो क्या ट्रांसफॉर्म हो जाता है जस्ट टू अर्न मोर एंड मनी. तो ये बहुत अच्छी वेब सीरीज़ है, यू कैन गो थ्रू इट. और इरेज्ड, ये एक्चुअली वेब सीरीज़ नहीं, एनिमेटेड सीरीज़ है, ठीक है. तो माय सजेशन फॉर यू, एक बार जाके देखिए, अगर पसंद आता है तो आई डेफिनेटली रिकमेंड इट. स्पेशली ब्रेकिंग बैड इज़ गुड. तो इसका रिव्यू भी आप पढ़ेंगे ना तो यू विल फाइंड इट गुड. तो ब्रेकिंग बैड, इरेज, दीज आर वेब सीरीज. नेक्स्ट विल कम टू दिस सेक्शन. Because you're school going students, some of you have just started probably 2 months ago and 3 months ago, and then the exams have come, so of course there's some break in that and you have forgot everything which you have done it earlier. So understand again or revise it. If you have done it, understand or revise the concepts of tones, tones of the passage, inference, how to find it, inference. Okay, and main idea, or main idea means theme also. And sometimes the questions they come like, what have you inferred from the passage. ये सारे question main idea से related है. तो please solve and understand this concept again. If you're forgetting it, if you're not forgetting it but still you are at the basic at the basic junction, then you have to up yourself, right? So keep solving the questions. First understand, maybe from faculty, maybe by watching our series of RC series, you can understand it again and solve the questions. Solve at least 20 mock tests and do the analysis. Okay. For droppers, I've suggested 25, but for you, because you're school going, you have got much more work, then exams will also come and other activities, practical, etc., etc. So 20 mock tests in this April month, you have to cover it. Anyhow, you want to give 20 mock tests full, that's okay. Otherwise, 20 mock tests, 20 section wise, English section mock test you have to give. ठीक है. तो आप देख लो जो आपको करना है, बट 20 इंग्लिश मॉक टेस्ट कवर करना है आपको. बिकॉज मॉक टेस्ट इज द की, बट नॉट ओनली गिविंग द मॉक टेस्ट. रिमेंबर, analysis, the second portion is more important than the first one. If you are doing just the first thing and the first part, कुछ नहीं होना है. First part, then the second part, that is the analysis, you will do it, then the whole thing you have done it. And mock test is the key. Once again I'm repeating those words, है ना. Mock test is the key for the selection. You have to give more and more mock tests, है ना. उस स्टेज पे पहुंचना है, प्लस एनालिसिस. तो ये स्टेप तो आप छोड़ ही नहीं सकते, किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते. नेक्स्ट, vocabulary enhancement. I have already suggested the technique which your faculty is also suggesting you, and she is teaching you also, he or she.
दैट इज फ्लैश कार्ड्स, यूसेज ऑफ फ्लैश कार्ड्स. फ्लैश कार्ड्स क्या होता है, आप समथिंग रेक्टेंगल स्क्वायर शेप का आप कुछ ले लेते हैं आर्टिकल, उसके फ्रंट साइज पे यू हैव रिटन द नेम ऑफ द वर्ड, नेम लाइक अभोर द वर्ड, है ना, अभोर वर्ड है, उसके बैक साइड पे आपने उसका यूसेज लिख रखा है, कैसे इसको यूज किया है, एंड द सिनोनिम्स ऑफ अभोर. ठीक है, दैट इज द फ्लैश कार्ड यूसेज. तो यूज फ्लैश कार्ड्स, रूट वर्ड्स टेक्निक्स, निमोनिक्स टेक्निक्स. ठीक है, यू यूज एनीथिंग. और ईऑन पे आर्टिकल्स पढ़ना मत भूलिएगा प्लीज़, वो तो मस्ट है. ठीक है, ईऑन है, देन देयर इज फरनाम आल्सो, सो यू हैव टू रीड. चलो, रीड नॉर्मन लुइस बुक, ये तो बेसिक है, जो कि ड्रॉपर्स को मैंने सजेस्ट इसलिए नहीं किया कि जनरली ड्रॉपर्स पढ़ लेते हैं पहले ही. आई एम सजेस्टिंग यू बिकॉज, अच्छा, दो टाइप की बुक्स आती है, वन इज रेड वन and one is white one. White one is छोटू मोटू type, that means that is quite handy, तो आप हमेशा उसके साथ अपने पास रख सकते हैं. But the red one is the big one, so whichever you want to buy you can buy it, but you have to read Norman Lewis book, that is for the vocabulary enhancement. Okay, and one thing more, whatever your faculty she is teaching you for vocabulary, revision is a must. पूरे वीक का रिवीजन होना चाहिए, फिर देन पूरे मंथ का रिवीजन होना चाहिए. ठीक है, ऑल द वर्ड्स, बट डोंट क्रैम इट प्लीज, है ना. वो जो आप रटते हैं, दैट थिंग वोंट डू एनीथिंग. व्हाट यू हैव टू डू, you have to learn, and you have to see the word, the meaning, and understand the usage. By using it, by regularly using those words, whichever you're finding it from your near environment, आपने जो भी वर्ड्स नए लर्न किए हैं, यूज इट. ठीक है, मे बी यू आर स्पीकिंग टू एनी बडी, मे बी यू आर राइटिंग एनी आर्टिकल, कईयों की आदत होती है राइटिंग द आर्टिकल, विच इज़ वेरी गुड. in fact this very good habit for vocabulary enhancement. कोई आर्टिकल आप या ऐसे लिख रहे हैं तो ठीक है, तो यूज दोज वर्ड्स इन दैट. तो ऐसे करके प्रैक्टिस होती है, राइट. तो क्रैम कर रहे हैं आप उसे, तो वो नहीं चलेगा बिल्कुल, राइट. डोंट क्रैम इट माइंडलेसली. तो यूज योर इंटेलिजेंट माइंड, understand the usage, and try to use it in your regular practice. Okay, and revision. So note down करिए सारे new words को जो आपकी faculty पढ़ाते हैं. Every day 5 new words you have to do it. Maybe through root words, maybe through mnemonics, any technique which you are using it, but you have to use it. Okay. Sorry. Okay. Next revision तो मैंने बता दिया. Self study for English, because English doesn't mean only English, it means the critical reasoning part also, it means the legal reasoning also, और current affairs में definitely help करेगा, जैसे कि बता दिया newspaper reading में. But we'll take it even the 3 section also. तो 3 section लेंगे उस हिसाब से भी, because it is helping in 3 section. तो you have to do self study for 2 hours at least. Okay. तो 2 घंटे का सेल्फ स्टडी, दैट मीन्स इट डजंट इंक्लूड न्यूज़पेपर रीडिंग, इट डजंट इंक्लूड रीडिंग एनी ऑफ योर बुक और नॉवल. नो, इट्स नॉट इंक्लूडिंग दैट. आप कुछ वॉच कर रहे हैं, कुछ लिसन कर रहे हैं, ये सब इंक्लूड नहीं करेगा. तो सेल्फ स्टडी में क्या करना है, सेल्फ स्टडी में मॉक टेस्ट इंक्लूड होगा. ठीक है, यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ टोन्स एंड इन्फ्रेंसेस एक्सेट्रा, वो सब आप कर सकते हैं, एंड वोकैबुलरी एनहेंसमेंट. ओके, तो ये है ना, दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इन 2 hours, रिमेंबर. But newspaper reading, different time, remember, it's excluding that. Next, so school going aspirants, your strategy, I hope it's clear. Now we have one more group here, beginners. They have just joined, probably 15 days ago or 1 month ago, or maybe today only you have joined it. Okay, so what kind of strategy which you have to follow this month? You have got 6 months. I would say 6, but you have got 7 months, but I would say 6 months, because 1 month is all for the revision. Whatever you have learned, you have to revise it. So 6 months हैं आपके पास, so how you can use it beautifully, है ना, in very less time you can do it more. That's what you have to do it. So for this April month, because you're just starting it, you have to first understand the CLAT syllabus.
क्या है ये क्लैट के क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यू नो, गो थ्रू दोज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स. So what kind, how many questions are coming in English, in legal, in logical, in QT, how many questions English में आते हैं? 23 to 26 questions आते हैं, more or less 24 to 25 आते हैं, ठीक है. तो how many passages are there and what kind of passages are coming? However, it's different, but more it's from philosophy, literature, you know, history or science, है ना, इन सब से आते हैं. आपके पुराने प्लेज आ जाते हैं, शेक्सपियर के प्लेज, एनीथिंग कुड बी देयर, right? So you have to basically first understand the syllabus of the CLAT and you know, the weightage of the questions, right? और नेगेटिव मार्किंग कितनी होती है, दैट इज 0.25, वो सब चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी है पहले, और व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग इन ईच सेक्शन. देन if you're reading newspaper, that's great, and you have to read English newspaper. Remember, if your English is very basic or maybe at zero level, I'll suggest you to read Times of India. ठीक है, स्टार्ट करिए टाइम्स ऑफ, जो भी पसंद है उसके अंदर. आपको बॉलीवुड न्यूज़ पसंद है, ठीक है, आपको पेज 3 न्यूज़ पसंद है, आपको करंट अफेयर्स का कुछ इलेक्शन वाली न्यूज़ पसंद है, ठीक है, व्हाटएवर यू लाइक, स्पोर्ट्स पसंद है ना, एनी सेक्शन यू लाइक इट, जस्ट रीड इट, ठीक है, स्टार्ट रीडिंग. दैट्स व्हाट आई विल सजेस्ट. टाइम्स ऑफ इंडिया, एनी सेक्शन, बट एटलीस्ट वन आर्टिकल यू शुड रीड, है ना. अप्रैल मंथ एंड होते होते everybody should read 4 to 5 articles, probably from Times of India. And if you feel your English is decent enough, then I would suggest you to read again Hindu, the Indian Express, ठीक है, वही हमारे बेस्ट न्यूज़पेपर हैं, तो वो रीड करिए. स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड देन अप्रैल मंथ फिनिश होते होते 4 आर्टिकल्स एटलीस्ट फ्रॉम हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस, ठीक है. So that's what the strategy should be, and read whatever you like, okay? Now about the book suggestion, again to the droppers I've suggested some, to our school going candidates I've suggested some. For you I'll say whatever you like, whatever you like. That means the best books which are self-help books, I would say Atomic Habits, Ikigai, please do read them, ठीक है. खालिद हुसैनी ये बहुत ही बढ़िया राइटर हैं, इनकी कई सारी नॉवेल्स है. सो फेवरेट वन इज काइट रनर, रीड इट, ठीक है. तो जो हमारी प्राइड एंड प्रेजुडिस है, जेन ऑस्टिन की मूवी है, सॉरी नॉट मूवी, नॉवल है, तो प्लीज़ ये सब जो हमारी क्लासिक बुक्स हैं और जो जनरली हर कोई रीड करता है, आप उनको रीड करिए, ठीक है. और रस्किन बॉन्ड शॉर्ट स्टोरी बुक्स लिखते हैं, प्लीज़ उनको भी ज़रूर रीड करिए. बाकी वॉट एवर इफ़ यू फील लाइक नहीं मज़ा आ रहा, तो जो आपको पसंद है, चेतन भगत की नावल पसंद है, आप चेतन भगत की नावल पढ़िए, बट यू हैव टू रीड. दैट्स द मेन थिंग, दैट्स द क्रक्स ऑफ द मैटर. यू हैव टू स्टार्ट रीडिंग, यू हैव टू एन्जॉय इट, ठीक है. इफ़ यू वॉन्ट एन्जॉय इट, तो मतलब ये सब बकवास है फिर, ठीक है. तो कुछ ऐसा ढूंढना है कि आपको रीडिंग एन्जॉय करें. और कितनी रीडिंग करनी है, एटलीस्ट 1 आवर रीडिंग, ठीक है, 1 आवर, और फिर आपको फिर 1.5 आवर तक आना है, ठीक है. रिमेंबर, तो न्यूज़पेपर, बुक्स, novels, anything. Tones or inferences, main ideas of the passage, understand the concept from your faculty. If not from the faculty, she will teach you maybe later on. So you can go through our series also of these, you can watch the videos related to these. Law prep tutorial पे सारे videos हैं इनके, so you can go through them. Next, vocabulary enhancement, right from the day one, you have to do it. Of course, whatever these are doing English newspaper, these are doing the vocabulary building activities for you. What more? Synonym, antonym. Whichever the word you come across while reading, maybe through the book, maybe while reading in a newspaper, note it down in your notebook, okay, and just Google the synonyms and write down in your register. That's what you have to do it, and revise it every day. Do the revision of those previous words. वीक का रिवीजन होना चाहिए और मंथ का रिवीजन होना चाहिए. मंथ में जितने वर्ड्स किए उसका रिवीजन अलग, हर वीक का रिवीजन अलग. So that's what the beginner strategy should be like. And download some good vocab apps. Again, I am suggesting the same one, the Hindu vocab app. It's not the Hindu vocab app. It's a very good app. उसमें editorial section पे जाइएगा and read editorials. In that, what is there?
you will find the meaning of those difficult words also. जो भी articles में difficult words हैं उनकी meaning they have given it. So it would be a great help for you. So download the Hindu vocab app. ओके बैलेंस की जीआरई लिस्ट है, वोकैब वर्ड्स की, हाई फ्रिक्वेंसी वर्ड्स की लिस्ट है. अगर आप डाउनलोड कर सकते हैं उसका पीडीएफ, वेल एंड गुड. नॉट ओनली डाउनलोडिंग इट, एवरी डे एटलीस्ट डू 5 to 6 वर्ड्स फ्रॉम दैट लिस्ट. ठीक है, तो बैलेंस हाई फ्रिक्वेंसी वोकैब लिस्ट. एंड अगेन यू नो सब कुछ एकदम मतलब बहुत फास्ट मत करिएगा वरना जक्स्टापोज हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एंड यू फील लाइक कहाँ फंस गए. ठीक है, स्लोली वन बाय वन, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करिए. राइट, तो एकदम से एक ही दिन में सब चीज़ कर लोगे तो यू फील एग्जॉस्टेड. राइट, तो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप लो कि हाँ पहले मैं थोड़ा सा रीडिंग किया है, आज मैंने ये आज ये पॉडकास्ट देखा है, ये सुना है मैंने, तो उसके बाद से कल से मैंने 2 वर्ड्स याद करने शुरू किए हैं. देन यू हैव कम टू दोज 5 वर्ड्स. दैट्स हाउ यू हैव टू गो थ्रू इट. राइट, सो I don't want you to be at a good speed you have started. No, थोड़ा सा टाइम लीजिए और फिर स्लोली पिकअप करिए आप. ठीक है, अच्छा. Every 1 day in every week we have got this mock test. You please try the mock test. Why you have to try the mock test? You'll understand what kind of questions are coming and what is the pattern. ठीक है, भले ही आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, इट्स डिफिकल्ट फॉर यू, फील लाइक ओ गॉड दिस इज टू मच. ठीक है, ऐसा तो नहीं लगेगा दिस इज टू मच, बट इट वुड बी अ ग्रेट हेल्प फॉर यू. सो जस्ट गो थ्रू इट. इवन यू कैन सॉल्व ओनली प्रोबेबली 20 questions, 50 questions, है ना, बट स्टिल गो थ्रू द होल पेपर. राइट, तो यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट. देन movies, web series, again, or anything of your choice, but English movies or English web series. Again, I'm suggesting you because people don't like, especially our Indian candidates, Indian students, हिंदी वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हैं. ठीक है, तो हिंदी वेब सीरीज़ देखना पसंद करते हो तो प्लीज़ स्विच ऑन द इंग्लिश सबटाइटल्स एंड रीड दोज इंग्लिश सबटाइटल्स में जो भी लिखा हुआ आ रहा है उनको रीड करिए, तो वो बहुत सही रहेगा. अदरवाइज वॉच इंग्लिश वेब सीरीज. ठीक है, गो थ्रू अगेन सम गुड ब्लॉग्स, है ना, प्लीज़. और सजेशंस मैंने ऑलरेडी आई हैव गिवन इट अबाउट द वेब सीरीज, अबाउट द फिल्म्स. यू कैन वॉच दोज फिल्म्स, वेब सीरीज, है ना. यू कैन गो थ्रू द स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स के लिए मैंने जो बुक्स सजेस्ट की थी, मालगुड़ी डेज, झुम्पा लाहिरी की बुक सजेस्ट करी थी, आप वो भी पढ़ सकते हैं, नेम सेक. राइट, so suggestions have already been given, but beginners you have to just start and you have to go step by step. Right, that is the main thing. Okay, तो reading तो newspaper is number 1 step, वो आपको अभी से start कर देना है. I hope droppers your strategy is also clear. School going candidates and especially our beginners, है ना. Please next video भी जब make a strategy का आएगा, do watch it. ठीक है, हम थोड़ा और इंटेंसिफाइड करेंगे उसे. एंड आई सजेस्ट यू सम मोर बुक्स, सम मोर चैनल्स, सम मोर वेबसाइट्स. आई सजेस्ट यू मोर पॉडकास्ट सजेशंस वुड बी देयर. ओके, टिल देन आई होप यू अंडरस्टूड एवरीथिंग. और आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो, आप अपनी फैकल्टी से या मुझसे कुछ भी चीज़ इंक्वायर कर सकते हैं. राइट, तो डोंट गेट अफ्रेड, इट्स जस्ट यू हैव टू स्टार्ट, है ना. डोंट वेस्ट इवन अ सिंगल मिनट. राइट, remember one awesome thing you have to do every day, one outstanding thing you have to do every day. That's what. अगर सिर्फ 1% का आप चेंज ला रहे हैं, 1% चेंज, 1% एनहांसमेंट इन यू एवरी डे, ठीक है, बस हो जाएगा सिलेक्शन. योर ड्रीम सिलेक्शन से नहीं, मतलब ड्रीम कॉलेज जो चाहते हैं वो आपको मिल जाएगा. I hope everything is clear. You have understood the strategy and you would try to stick to it. It is for your benefit. Till then, all the best. Bye.